No. So next topic is filter. It's very easy. This is also one of the most used feature in Excel. So can anybody tell me what is filter? Explain karo. What do you mean by filter? Answer. Removing unwanted data. है ना? That we need filter. Simple. समझ में आया? Yes, sir. So see कैसे करना है. So it's very simple. It's very simple. What you do? Click any one of this cell. Okay. Go to this sorting and click on this filter. Okay. So when you will click on this filter, you will have these small combo icons. Could you see this drop down boxes, small arrows here? Okay. I hope you could see these arrows, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Here, when you will see, देखो, when I click on any one of this record, I will get the unique values. Okay. We have so many values here, but what we will get? We will just get the unique values. Okay. Now here what we can do, if I just want to see the female data, so I'll just select this male M. Okay. And then click OK. So what it will do? It will just remove the males from the data and it will give me the female data. Samajh Maya? Yes, sir. Similarly, if we have just want to see the male data, so I'll just remove the female and click OK. Done. No, it is simple. Correct? Yes, sir. Now, if you want every data, तो आप क्या करोगे? Click कर दो सारे पे and click OK then. Done. Now, similarly, we can do it the categories also. Like I want to see the general category, so I click on this general and click OK. It's very simple, है ना? यहाँ तक clear है फंडा? हाँ, sir. Now, just one point here. Now, just check. यहाँ पे आप देख रहे हो कि if you're talking about this small arrows, you will see a different arrow here, है ना? It is different from others, right? देख रहे हो? So this will help you to identify कि किस सेल में आपका फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है? समझ में आई बात? या नहीं आई? हाँ सर. ठीक है? So you can easily identify that we have applied filter to this column. So I can click on this column again and then select one and click OK. Done? Yes, sir. Okay. Sometimes we do have multi-level or multi-stage filtration, है ना? जैसे कि हमारा प्यूरिफायर में होता है कि पहले वो impurities हटाता है, then arrow को हटाता है, then UV filtration, right? We have different stages. Correct? Similarly, we can also filter our data in different stages. For example, like I want to see the students who are male and are of general category and are coming from Patna. So what is my filtration? Male who are of general category and coming from Patna. We have now 3 stages of filtration, correct? है ना? So what we will do? I'll just choose male, then general, and then Patna. समझ में आया? Now we have the remove all the unwanted data. Is it clear? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Okay, thank Yes, you. sir. Good. Now what we can do? We can just copy it. यहाँ पे हम copy कर सकते हैं, and then I can paste it in another cell. समझ में आया? Yes, sir. Done ना? पक्का? हाँ, sir. Okay. Now it is easy to filter the values which are in text format. जहाँ पे we have single values. But how to filter the values when we have values in numbers? जैसे कि यहाँ पे देखो income है, right? Now I want to filter the data in which I just want to see the students whose income is less than 1 lakh. So how to do that? What you will do? You will click on this arrow and then you will click here and you will then just select the values less than 1 lakh, correct? है ना? And click OK. Yes or no? Yes, sir. No, don't do that. ठीक है? What you will do is remember that conditional formatting. यहाँ पे हमारे पास है ना greater than less than. Similarly, we have in filter also. See, click on this number filter and you will see all the conditions here.
So I just want to see less than how much, 1 lakh. So 1 lakh दे दो, click OK, and you will get all the records below 1 lakh. समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है. Similarly, we can do with the filtration with the text also, not that also. See, चलो, I'll show in a big record now. Now this is a big record here. So what I'm going to do is, okay, here we have polygon, so I'm going to just remove all the rules from here. Clear rules from select Excels. Done. Now, as you could see, we have a huge data. Now, if I'm going to filter this, so it is not possible here to filter all the data. दिख रहा है? Every data is a different data here. है ना? Do you think it is easy to filter from like normal? Chalo. So now what I need to do is, again, I will go to this text filter and you can use this feature like contains. So contains, so what I will do, I will use like Hajipur. And then just I'll click OK. See, all the records will be filtered which contains Hajipur word. समझ में आया? Yes, sir. So this way also you can filter your data. I hope the filtration is clear to you all guys. Yes, sir. Okay, now let's go to the advanced filter option. Now, Okay. till now what we are doing, we are filtering the data and then जैसे पटना को मैं select करता था और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसे कॉपी करके फिर दूसरी जगह पे पेस्ट करते थे, राइट? है ना? Yes, sir. हाँ सर. बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और टाइम टेकिंग भी कह सकते हैं, और वी कैन से ओके ये अलग अलग करना पड़ता है. बट व्हाट इफ मैं डेटा को ही अलग लाना चाहता हूं, तो सी वी हैव वन मोर ऑप्शन हियर. नाउ व्हाट इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू इज, आई हैव द डेटा एंड आई हैव द कंडीशन हियर. नाउ सी इट्स वेरी इजी. So click on this, then go to data this type, and here you will see advanced filter. You will get this filter option here also, but you will see advanced filter option. So click on this advanced filter. So when you will click on this advanced filter, see, these are the options that you will get. List range, criteria range, and copy to. So chalo, hum log zara sa ise use karte. So by default, the whole table is selected with the dashed green lines, as you could see. उसके बाद हमें क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, सो आई क्लिक हियर एंड देन सिलेक्ट दिस रेंज, रीजन एंड पटना. ठीक है? एंड वेयर आई वांट टू कॉपी हियर, अयो सॉरी, एडवांस फिल्टर, क्लिक हियर, सिलेक्ट दिस रेंज. नाउ यहाँ पे करो कॉपी टू दिस लोकेशन, क्लिक हियर एंड सिलेक्ट दिस सेल एंड क्लिक ओके, एंड यू विल सी ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम पटना आर इन दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा. समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर. एक बार फिर से देखें. चलो, व्हाट इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशंस, पटना एंड फीमेल, तो वहां पे भी हम लोग कर सकते हैं. देखो, सिमिलरली क्लिक हियर, गो टू दिस एडवांस क्राइटेरिया रेंज, सिलेक्ट बोथ द थिंग्स, देन कॉपी टू लोकेशन, क्लिक हियर, ओके करो एंड यू विल हैव द रिकॉर्ड्स हियर. ठीक है? समझ में आया? हाँ. हाँ सर. ठीक है. यहाँ पे देखो, अगर हम लोग अमाउंट भी करते हैं तो वी कैन हैव दिस लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल. ठीक है? लाइक लेस देन 70,000. सो क्लिक हियर, देन गो टू दिस एडवांस फिल्टर. ठीक है? क्राइटेरिया रेंज दिस वे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्लिक करो एंड क्लिक ओके. डन. समझ में आया ना? सी ऑल द इनकम. हाँ सर. तो ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है. वी कैन डू विद द डेट्स आल्सो, लेस देन 15. ठीक है? और इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं. क्लियर है ना फ्रेंड? हाँ Yes, sir. सर. चलो, इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाता है. लाइक हियर वी हैव मल्टीपल cities names, but I just want to see Patna and Gaya. ठीक है? तो what I can do, I can use Gaya also here. ठीक है? And here advanced filter पे चलते, copy location, criteria is like यहाँ पे क्लिक करके I will choose the criteria to a little extent, बड़ा सा कर देंगे, then यहाँ पे आइए choose थोड़ा सा ठीक से करना, copy here and then click OK. You will get all the students from Patna and Gaya. समझ में आया? So we can have multiple conditions also. ठीक है? हाँ सर. Okay, so last topic for today. Like till now what we are doing actually, we are actually doing that we are just pasting in the same page, है ना? हम लोग उसी जगह पे पेस्ट कर रहे हैं. But what if we do we need to paste in another page? Like हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाए. I'll just change it little region to Patna. Now
what I want to select it from here and paste it to here automatically. See, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एडवांस फिल्टर पे जाते हैं, टेबल इज देयर, criteria, I'll choose the criteria. Now copy location पे click करके if I'm choosing this page and click OK, see, an error will be encountered. ठीक है, अब वो क्या error है पढ़ के बता सकते हो? Could you identify this? You can only copy filter data to the active sheet. Yes. So what is that meaning? Active sheet का मतलब क्या होगा? Current sheet loan, we can apply that filters to the current sheet only. Yes, Current to the what we are current sheet using. only. That means if you want to copy it, we can copy in the same sheet, right? In this, let's see. So active sheet का मतलब देखो क्या होता है? It's very easy. So first of all, what we will do, हम लोग पहले इसे active sheet कर देंगे, ठीक है? समझ में आया? And rather than selecting here, what we will do, I'll click here and then I'll click on this advance. ठीक है? यहाँ पे समझ में आया ना? Sir. ठीक है, अब यहाँ पे होने के बाद then what I will do, I'll click on this arrow and then I will select the table. ठीक है? Similarly, यहाँ पे क्लिक करो, फिर criteria range पे आप क्लिक करो, then again click here and then you select this range and copy this location और फिर आप यहाँ पे किसी भी सेल को select करके OK करो, you will get the records in another sheet. ठीक है? समझ में आया? One second, sir. One second. The error was what? Active sheet वाला error था, right? तो what I will do, मैं active sheet पे ही रखूंगा, जहां पे मुझे copy करना है ना, I will open that sheet, click करेंगे and फिर advanced filter करेंगे, ठीक है? And here I will click on this arrow and then I will select the table. Same process, ठीक है? Click करो, then criteria range, जहां से भी range select करना है, you can select the range. I don't want this range, so I will select this range, ठीक है? And then copy to another location, यहाँ पे हम click कर लेंगे, then समझ में आया? It's simple. हाँ sir. Done? हाँ sir. So this is what sorting and filter. I hope the topics are clear. हाँ sir.